Good morning, everyone. Hi, how are you all? I hope you all are fine at your places. Since you all know that we are doing chapter number second, terms, concepts, and their use in sociology. And today, what we are going to do, we're going to understand the fourth system of social stratification that is in the form of class. We're going to understand how social stratification is there in the society on the basis of caste. Okay, so as usual, I'm gonna share my PPT with you and share the textbook with you. So here I go. Here I go. So this is the textbook. Yes, this is the textbook. So we have to start from here, right? Right from class. So in the last class, we understood social stratification on the basis of caste, in which I told you that, in which I, in fact, I told you that how social stratification is there on the basis of caste, and today we're going to understand the basis in the form of class. All right. But before I read it, let's go into the PPT. So this is the PPT. And look, we are going to understand social stratification on the basis of caste, on the basis of class, by understanding these two thinkers, by understanding these two sociologists. They are right on your screen. Karl Marx and the second one is Max Weber. Now both these sociologists, both these thinkers are the thinkers that are going to tell you about the social stratification, right? And these are the two thinkers that are going to make us, make us easy to understand the stratification on the basis of class. Okay, and these two thinkers are actually German. They are German sociologists, right? Karl Marx and Max Weber, right? Okay, so moving on to the next slide. Okay, so when we talk about social stratification on the basis of class, then what Karl Marx says, Karl Marx says that there are two groups in the society. One is higher class, and the other one is lower class, right? He talks about two major classes. Remember that Karl Marx only talks about two major classes. One is upper class and the second one is low class. Or you can say that the upper caste is capitalist class, and the low class is your, okay, so low class is your laborer class, working class, right? So how you can understand this? There are two classes. One is ruling class and the other one is working class, right? So ruling class and working class. This is how you're going to understand. And this is what Karl Marx says, right? And now what is your working class and what is your ruling class? Now, ruling class is that class that are the owners of means of production. Now, what do you mean by owners of means of production? Now, what do you mean by means of production? It's important for you to understand what is means of production. Means of production is actually, listen me properly, means of production is your physical things and non-human things. Now, what do you mean by physical and non-human things? Look, when we have to produce something, suppose we have to produce cloth or fabric in a factory or in an industry, we need some instruments, we need some machines, we need some raw material, right? We need raw material, we need machines, we need instruments, we need some land where we can set up our factory or industry, right? So there are certain things. Look, I'm saying non-human things, non-human and physical things. So non-human and physical things are your means of production through which you produce things, right? Means of production means through which you produce things, right? It is actually the mean, it is actually the mean to produce things, right? So this is what means of production means. So whenever means of production comes, in front of you, you need to understand that means of production means physical and non-human things like land that we need for the factory, then machines, then instruments, then
raw material, it will have all those things, then only we'll able to produce things. So means of production is all those things, right? And who own people who own means of production are the owners of means of production, and they are known as your capitalist class. They are known as your ruling class. Obviously they are going to rule. Who have all the means of production, obviously they are going to rule, obviously, है ना? And the people who don't have means of production, people who don't have machines. When I say means of production, then it means land, instrument, machines, raw material that we need to produce anything that we are producing in a factory, right? So people who don't have means of production, obviously they are going to be the working class. They are going to be the laborers in the factories, right? So this is how Karl Marx says when he talks about the social class, when he talks about the social stratification on the basis of caste. He gives us two classes in the form of ruling class, and the second one is your working class, right? I'm sure you are understanding. Okay, so I'm sure now you have understood these two classes. Okay, so look at that, what is written. Basically, the ruling class is also known as bourgeoisie, and the working class is known as proletariat, right? But we will understand it in simple terms by understanding that people who are the owners of means of production are actually ruling class because they are ruling, and the people who don't have means of production, they are actually your working class, right? And ruling class is also known as your capitalist class because they have got the capital and they are actually ruling, right? So that is what your ruling class is all about. And the other hand, you have got your working class. Okay, so look, now what Karl Marx says, theories of class and stratification. Obviously we are understanding stratification on the basis of class, so we can understand it from the Karl Marx perspective, and I've already discussed a lot about this. For Karl Marx, there exist two major classes. I've already told you that there exist two major classes with significant inequality between the two. The two are delineated. Now delineated means the two are described. The two are described by their relationship to the means of production. Now I'm sure you are understanding. हम दोनों क्लासेस को कैसे समझते हैं, दोनों क्लासेस को कैसे डिफाइन किया जाता है, दोनों क्लासेस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, जब हम उनका रिलेशनशिप समझते हैं मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज मींस ऑफ प्रोडक्शन. मींस ऑफ प्रोडक्शन जो भी चीजें we need physical things or non-human things. Remember I'm saying non-human things. जो भी हमें चीजें चाहिए होती है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उस मीन से वी आर प्रोड्यूसिंग. अगर हमारे पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, वी विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो एक क्लास का रिलेशनशिप क्या है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से, उससे हम समझते हैं दो क्लासेस. ऑब्वियसली जो ओनर्स हैं उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए दे आर नोन एज योर रूलिंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास. एंड द अदर क्लास जिनका रिलेशनशिप नहीं है, who don't have means of production, are your working class laborers, right? जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं. So the two are linear means two are described by the relationship to the means of production in a given society. Those two classes are defined as the owners of the means of production. I've already told you this. And those who sell their labor to the owners of the means of production. अब एक तो होगी हमारी एक तो हमारी होगी रूलिंग क्लास एंड द अदर वन इज वर्किंग क्लास. अब वर्किंग क्लास में सारे लेबरर्स आते हैं जो अपनी लेबर को सेल करते हैं फैक्ट्रीज में, एंड दे गेट लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर व्हाट दे डू इन द फैक्ट्री, राइट? ओके, इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी. और बेसिकली ये सारी चीजें या ये क्लास सिस्टम जो स्ट्रैटिफिकेशन का एक पार्ट है या सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये बेसिकली कहाँ पे होता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में होता है. कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वो होती हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज आर देयर, पीपल हैव गॉट द कैपिटल, पीपल हैव गॉट द मींस ऑफ प्रोडक्शन, एंड दे कीप laborers in their factories who work for them, right? The two classifications represent the opposite social interests of their members, and capitalists and good wages for the laborers and creating social conflict. Obviously there are two classes, both have got different interests, both have got different mindset. One is your working class that wants to produce that wants to work in the factories, and the other one is your ruling class that wants to exploit the laborers. जितना वो कर पाए उतना वो करते हैं exploit by giving them less wages, or they take out a lot of work out of the laborers. तो दो different classes बन गई है. They have got different interests, they have got different aim and objectives, और एक टाइम पे आके क्या होता है, उन दोनों में conflict हो जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि Karl Marx always talks about conflict. So इसका मतलब अगर आपको मैं बोलूं कि who is that sociologist, who is that social thinker who talks of conflict or who talks about conflict theory, then you will say Karl Marx. So Karl Marx is the one who talks about the conflict theory, who talks about your
conflict, और conflict किसमें होता है? Conflict between the two classes that Karl Marx says. One is your ruling class, the other one is your working class. Karl Marx कहते हैं कि एक टाइम पे आके जब ruling class exploits the working class, बहुत ज़्यादा exploitation करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग क्लास होती है वो एक टाइम पे आके प्रोटेस्ट करने स्टार्ट हो जाती है, एक टाइम पे आके वो रिवोल्ट करते हैं, एक टाइम पे आके वो रिबेल करते हैं, और इसलिए conflict eventually comes in the society, right? So kindly text me if you are understanding. Kindly text me. Hurry up, fast. Kindly text me if you are understanding what I'm trying to make you understand. So here we have understood classification that is done on the basis of your class, or when we understand class, then we really understand Karl Marx, right? Okay. So Ria, clear? Yes, sir. Ravisha, clear? Puneet, yes, sir. Okay, what about others? Okay, so this is what happens, right? Okay, this is what your social stratification on the basis of caste is all about. Okay, so this was the first perspective when we understand class. Okay, so let's move back to your book. Now you will easily understand everything, because I have already told you what is working class, what is ruling class. Ruling class is also known as capitalist class because they have got the capital. They are the owners of means of production. I've already told you what is means of production. Means of production means all the instruments, machines, raw material, land that you require for, producing something, right? So I've already, made you familiar with all these things, right? Now we'll easily understand, and we will easily and smoothly go through these paragraphs that are there in your textbook. Now class, there have been many attempts to explain class, बहुत सारे attempts हुए हैं class को explain करने के लिए, but basically जब हम class को समझते हैं, social stratification का जो एक part है जिसके basis पे social stratification होती है, तब हम Karl Marx और Max Weber को समझते हैं, and I've already explained you everything about Karl Marx or what he says. और अब जब ये theory आप समझते हो, इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि कार्ल मार्क्स always talks about conflict. So conflict theory कौन बात करता है conflict theory की? कार्ल मार्क्स बात करते हैं, क्योंकि दो क्लासेस के बीच में एक टाइम पे आके बहुत ज्यादा conflict हो जाता है, बहुत ज्यादा opposition हो जाती है, और वो एक revolt का हिस्सा बन जाता है entire social system. Okay, so there have been many attempts to explain classes. We mentioned here very very briefly just the central ideas of Marx, Weber, and that of functionalism. Okay, so Karl Marx functionalist theory, Karl Marx conflict theory, और एक functionalist theory भी होती है, we will also understand that. Okay, और Weber भी अपनी एक class के बारे में बताते हैं, how he explains caste. Okay, so in the Marxist theory, social classes are defined by what relation they have to the means of production. Now I'm sure you have understood that what kind of relationship people have with the means of production, right? Okay, questions could be asked as to whether groups are owners of means of production such as lands or factories, or whether they are the owners of nothing but their own labor, obviously. Okay, so this was what Karl Marx social stratification on the basis of class was all about. Look, आपके book में only few lines are given, only about 3, 4, 5, 6, 7, 8, only 6, 7 lines are given regarding only, and these are very, this is a kind of brief explanation of class on the basis of class explanation, or that's the reason I thought that I should go with the PPT. Okay, अब हम समझेंगे class जो कौन बताता है, जो मैक्स वेबर बताते हैं. अब मैक्स वेबर की जो क्लास की डेफिनेशन है, या जो क्लास को डिस्क्राइब करते हैं या डिलिनिएट करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए, वो थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं. अब हम वो समझेंगे मैक्स वेबर क्या कहते हैं, व्हाट मैक्स वेबर सेज. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द okay. So Max Weber. So look, Karl Marx is also German sociologist, and your Max Weber is also German sociologist. Till now, right from the day one, I have told you 4 sociologists. Your one is Auguste Comte, who is father of the sociology, and second is your Emile Durkheim, third one is your Karl Marx, and fourth one is your Max Weber. So abhi tak I have told you about the 4 sociologists. First 2, Auguste Comte, and the second one is your Emile Durkheim. Both are your French sociologists, both belong to France, right? And the 2 remaining, Karl Marx and Max Weber, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, they both are German sociology, right? So 2 belongs to France and 2 belongs to
Germany, right? Germany. And that's the reason we say that two are French sociologists and two are German sociologists. अब जब हम क्लास की बात करते हैं, जब when we understand class, जो एक social stratification create करता है, वो मैक्स वेबर किस तरह बताते हैं, we'll understand that. Okay. So German sociologist Max Weber agreed with Marx. Okay. Now what we have understood कि जो मैक्स वेबर हैं वो कहीं ना कहीं एग्री करते हैं विद द कार्ल मार्क्स, राइट. वो एग्री करते हैं कि यस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज देयर, जिसको हम एक वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास मान सकते हैं. बट कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस दैट आर मेंशन्ड बाय कार्ल मार्क्स, जो हमारे मैक्स वेबर हैं वो अपनी थोड़ी और क्लासेस ऐड करते हैं. ही सेज दैट कार्ल मार्क्स इज राइट, क्लास इज देयर, बट क्लास इज नॉट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या है, सिर्फ उस बेसिस पे हम क्लास को नहीं क्रिएट कर सकते. कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं दैट गिव राइज टू द क्लास इन अ सोसाइटी, राइट. और वो एडिशनल फैक्टर्स या वो एडिशनल पैरामीटर्स और डायमेंशंस कौन देता है, वो मैक्स वेबर देते हैं. So look at that, what is written. German sociologist Max Weber agreed with Karl Marx or Marx, but also believed that in addition to, so that's the reason I was using the word additional parameters, additional dimensions or additional aspects of class कौन देते हैं, हमारे मैक्स वेबर देते हैं. ओके. सो इन एडिशन टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सो कहीं ना कहीं जब कार्ल मार्क्स बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात करते हैं. जो हमारी रूलिंग क्लास थी वो इकोनॉमिकली गुड थी और जो हमारी वर्किंग क्लास थी that class was not economically good. So कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि in addition to economic inequalities, कहीं ना कहीं political power की भी inequalities होती हैं और social structure में जो political power की inequalities होती हैं और हमारी inequalities of economic inequalities होती हैं, और वो एक prestige की भी बात करते हैं. That will understand it further, right? Okay. So these are the classes that Max Weber ने दी हैं. So he's look, we understood only one dimension of class जो हमें कार्ल मार्क्स ने दी थी. Now we'll understand the three dimensions of inequality जो किसने दी है, जो मैक्स वेबर ने दी है. Okay. So मैक्स वेबर कहते हैं एक क्लास हमारी जो बनती है वो मार्केट पोजीशन के ऊपर बनती है. Now what do you mean by market position? Type of job. एक पर्टिकुलर सोसाइटी में people have different kinds of job. So कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझने को हमें यहाँ पर we need to understand economic aspect. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो एक मार्केट पोजीशन के ऊपर बेस है, मार्केट पोजीशन मींस टाइप ऑफ जॉब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैसी है, उस बेसिस पे भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है, उस बेसिस पे भी एक काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, सोसाइटी की लेवल्स बनते हैं, हायरार्की बनती है, एक सोशल सिस्टम बनता है जिसके बीच में स्ट्रैटास होते हैं, राइट. एक लेवल, ये सारी चीजें. सो कहीं ना कहीं एक उस बेसिस पे मैक्स वेबर क्लासिफाई करते हैं सोसाइटी. और सेकंड स्टेटस के बेसिस पे. स्टेटस मींस ऑनर, प्रेस्टीज. अब देखो जब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब हो गई तो कहीं ना कहीं हर एक जॉब के साथ एक स्टेटस जुड़ा होता है, एक सोशल प्रेस्टीज होती है, एक वैल्यू होती है. सो मैक्स वेबर कहते हैं कि क्लास में जब एक हम सर्टिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स को तो हम मार्केट पोजीशन के बेसिस पे करते हैं, टाइप ऑफ जॉब के बेसिस पे भी एक सोशल सर्टिफिकेशन होती है और एक स्टेटस के बेसिस पे भी होती है, जिसमें एक इंसान के लाइफस्टाइल्स होते हैं, बेटर लाइफस्टाइल देन द अदर पीपल. Okay, obviously एक particular person की अगर better lifestyle है than the other person, then obviously that particular person will look kind of different from the other person. So कहीं ना कहीं वो भी एक social stratification का हिस्सा बनते हैं. Okay. एंड थर्ड वन इज पार्टी. और पार्टी का जब हम समझते हैं, पार्टी मींस पॉलिटिकल पावर. एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के पास कितनी पॉलिटिकल पावर है, कितने उसके कनेक्शंस हैं, कितने उसके लिंक्स हैं पॉलिटिकल पावर के साथ, काइंड ऑफ जो जितने भी पॉलिटिकल कनेक्शंस है, पॉलिटिकल पावर है, उसके बेसिस पे भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है. सो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने सिर्फ हमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास के बेसिस पे बताया था, जो एक सिंपली मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप था. बट कहीं ना कहीं व्हेन वी अंडरस्टैंड सोशल क्लास फ्रॉम द वेबर पर्सपेक्टिव, देन वी अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ CSP. C stands for class, S stands for status and P stands for party. Okay, so तीन dimensions हमें मैक्स वेबर बताते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के. Okay, so look at that. Weber, unlike Marx, sees multiple sources or gradients of inequality or stratification. So Max Weber
कहीं ना कहीं गिव्स अस मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज बताते हैं एक सोशल सर्टिफिकेशन होने के लिए. ओके, सीएसपी की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में सीएसपी, क्लास, स्टेटस और पार्टी, राइट. सो मैक्स वेबर हमें मल्टीपल बताते हैं, अनलाइक मार्क्स मतलब कि मार्क्स हमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव बताते हैं, बट मैक्स वेबर हमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव बताते हैं. सीएसपी अगेन क्लास, स्टेटस और पॉलिटिकल पावर. Class is based on economic resources, individual who have similar life chances and result of property income. Okay, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बताती हैं. और स्टेटस से भी एक सोशल सर्टिफिकेशन होती है कि सोशल स्टेटस कैसा है सोसाइटी में, प्रेस्टीज कितनी है, वैल्यू कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है इंडिविजुअल का, वो सारी चीजें भी हमें इट टेल्स अस अबाउट द सर्टिफिकेशन. तीसरा पॉलिटिकल पावर की एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कैसा है पॉलिटिकल अरीना के साथ और पॉलिटिकल डोमेन और उसके साथ पॉलिटिकल एक फील्ड के साथ कैसा रिलेशनशिप. ओके, सो दिस वाज व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव बैक टू योर बुक. ओके, okay. So Weber used the term, look at I'm reading from here. Weber used the term life chances, which refers to the rewards and advantages afforded by market capacity inequality. Now Weber has used a term life chances. Now what do you mean by life chances? Life chances means opportunities that a particular individual has. Life chances, when I say life chances, then it means opportunities, you know, the privileges, the rewards that a particular person has because of his status, because of his prestige, because of his position in the market. और पोजीशन कैसे बनेगी, ऑब्वियसली सीएसपी की फॉर्म में, कैसी टाइप ऑफ जॉब है, कैसा लाइफस्टाइल है और कैसी कनेक्शंस है, पॉलिटिकल कनेक्शन, उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लाइफ चांसेस बेटर होते हैं. ऑब्वियसली जिस इंडिविजुअल के पास सारे रिसोर्सेज होंगे उसको बेटर एजुकेशन मिलेगी, और जब बेटर एजुकेशन मिलेगी he'll able to get better job and he'll able to, you know, uplift his life in a better way, or he will definitely achieve a lot of prosperity in his life, right? Okay, so this was what your social stratification on the basis of class was all about, in which we understood two perspectives, one from Karl Marx, who is German sociologist, and the other one is also a German sociologist whose name is Max Weber. So kindly text me if you're understanding. Then only I'll proceed further. Okay. Okay. Tavisha, yes sir. Ria, yes sir. Ayushi understood. Krish, yes sir. Okay, clear. Puneet, Anushika. Look, why I'm going so slow? Because these are the terms and concepts that you really need to understand in this subject. If I'll move with a faster speed, then you will not able to understand what I'm trying to tell you. So that's the reason it was important for me to come up with certain PPDs so that you can get the best understanding, right? And it remains in your mind for a longer time. Now we have understood class as well. Earlier in the last class, we understood stratification on the basis of caste. We also understood classification or stratification on the basis of slavery. We understood the stratification on the basis of your state, right? So state, and then slavery, and then caste, and then on the class, right? Or class may we have also understood certain sociologists thinking how they classified society on the basis of class, Max Weber or Karl Marx, right? देखो, okay. So अब क्या होता है, अब ये तो था perspective क्लास और क्लास का यू नो कंसेप्ट, राइट. अब एक सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होने का मतलब है कि सम सोशियोलॉजिस्ट यू नो सपोर्ट द फंक्शनलिस्ट थ्योरी और सम सोशियोलॉजिस्ट सपोर्ट द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी. कुछ सोशियोलॉजिस्ट या कुछ थिंकर्स कहते हैं कि सोशियोलॉजी सोसाइटी जिस तरह रन कर रही है वो ठीक है, वो हमेशा एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट करते हैं. फंक्शनलिस्ट अप्रोच मींस सोसाइटी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं. वो कहते हैं सोसाइटी इज गोइंग वेरी स्मूथली, बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी इज गोइंग ऑन, और फंक्शंस जिसने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, दे ऑल आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन एंड दे आर सपोर्टिंग द kind of functionalist perspective, functionalist dimension of the society, और उनको हम functionalist theory कहते हैं. और कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं. ना व्हाट आर दोस सोशियोलॉजिस्ट, जैसे कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करते हैं कि वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास में एक टाइम पे आके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वर्किंग क्लास है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा बाय रूलिंग क्लास, और एक टाइम पे आके वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और रिवोल्ट होगी और रिपेल करेंगे और सारा स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी चेंज हो जाएगा.
ठीक है, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक सोशलिस्टिक सोसाइटी और कम्युनलिस्टिक सोसाइटी बन जाएगी, राइट। सो कहीं ना कहीं सोशलिज्म आ जाएगा जहाँ पे इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में व्हाट हैपेंस, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में मींस ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास होते हैं, जो कि हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैपिटलिस्ट क्लास होती है या रूलिंग क्लास होती है। बट कहीं ना कहीं जब कन्फ्लिक्ट आएगा तो सारी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी चेंज हो जाएगा। और ये कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, और इसलिए टू काइंड ऑफ थेरीज होती हैं, फंक्शनलिस्ट थेरी और हमारी कॉन्फ्लिक्ट थेरी, राइट। अब हम पढ़ेंगे। Okay, the functionalist theory of social stratification begins from the general presumption, uh, pre, presumption or belief of functionalism that no society is classless or unstratified. The main functional necessity explains the universal presence of social stratification in requirement faced by a society of placing motivating individuals in the social structure. Social inequality of stratification is thus an unconsciously evolved device by which societies ensure that the most important positions are deliberately filled by the most qualified person. Okay. In the traditional caste system, social hierarchy is fixed, rigid, and transmitted across generations. In these societies, modern class system, in contrast, is open and achievement based. In democracy societies, there is nothing to legally stop a person from the most deprived class and class from reaching the highest position. Okay, so what happens, I'll tell you. Okay, so what happens, okay, so this is what happens. So okay, so three component theory of stratification is given by your Max Weber, right? Three component means CSP, class, status, and party. Okay. Okay. So this is what we need to understand. And the paragraph was actually telling us to understand these things. Okay. Now look at that. There are two perspectives, functionalist theory or conflict theory. Now look at that. What is written? Differentiation is essential for a cohesive society. Now what do you mean by this? अब सोसाइटी में डिफरेंशिएशन हुई है, डिफरेंशिएशन मीन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई है सोसाइटी में, और फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहते हैं डिफरेंशिएशन इज गुड। दे कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर स्ट्रैटिफिकेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद योर डिफरेंशिएशन, और वो कहते हैं कि इट इज नॉट बैड फॉर द सोसाइटी। और ऑन द अदर हैंड conflict theory क्या कहती है? डिफरेंट ग्रुप्स स्ट्रगल ओवर रिसोर्सेज, compete फॉर सोशल एडवांटेज। ऑब्वियसली वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास के कंफ्लिक्ट की बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे मींस ऑफ प्रोडक्शन हो रही है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ फंक्शनलिस्ट थ्योरी मोटिवेट्स पीपल टू फिल पोजीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल। conflict theory results when those with the most resources exploit others. All society necessitate stratification to survive and to function well. Conflict theory: stratified social structures encourage inequality and manages by those in the upper levels of stratification. अब simply how you will understand कि जो functionalist theory होती है that tries to understand society through functions, that the functions जो perform हो रहे हैं that is not bad. अगर working class work कर रही है in the society, that is somewhere helping the industrialists or the helping the industrialization. Okay, so this is what happens. और कहीं ना कहीं जो conflict theories होते हैं जैसे कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं exploitation हो रही है और बीच में conflict हो रहा है, इसलिए they talk about the conflict, और conflict एक टाइम पे आके हो जाएगा working और ruling class का। और functionalist theory support करते हैं functionism को कि हर एक particular person is doing their role, और वही कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल है सोसाइटी का। अगर एवरीवन विल नॉट डू देयर फंक्शन देन सोसाइटी का सर्वाइवल नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं एवरीवन इज वर्किंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। ये हमारे फंक्शनलिस्ट थेरिस्ट कहते हैं या फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है। और ऑन द अदर हैंड conflict theory conflict की बात करती है जहाँ पे एक्सप्लॉइट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर फंक्शनलिस्ट एंड conflict theory इज ऑल अबाउट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर बुक। So कहीं ना कहीं this is what it means. Okay.
So now what we have understood today, we have understood stratification on the basis of class, Max Weber, Karl Marx. We have also understood functionalist theory and your conflict theory. Okay. Now there is another. Okay. Now there are only two topics that are left in this chapter. The one is status and role, and the other one is your status and role, and the other one is your social control. Here is the social control. So we are just left with two topics, status and role, and the other one is social control, right? And then we'll finish this chapter, right? Okay. So this was what it was all about. So if you have any doubt, kindly text me. Until now, we just need 2 more sessions to complete this lesson. Okay. So this is what happens. Okay, no. Okay, so I think the time has come to say you goodbye. I should stop share here. So take care all, stay safe, stay at home and utilize your time, and God bless you all. Bye bye.